Good morning, guys. So today is 6th of July, and we are heading to Bharuch again, but this time through a train, not by car. So I'll take a train which I normally board, and the time right now is exactly 7:25, and my train is at exactly 8:30. So let's go. Guys, I've just reached the parking of the railway station, and I realized कि मैं मेरा scarf भूल गई हूँ. आज बहुत दिक्कत होने वाली है. भरूच रेलवे स्टेशन से कॉलेज का रास्ता जो है वो मैं रिक्शा से जाती हूँ, ऑटो से. मेरे ना पूरे बाल ऐसे हो जाएंगे, सब ऐसे. मैं शाम को आऊँगी ना, मेरी ये वाली शक्ल देख लो, और जब मैं शाम को आऊँगी तब आप मेरी शक्ल देखना. यू विल फाइंड अ ह्यूज डिफरेंस इन दैट. और टाइम हो रहा है अभी 7:55, एग्जैक्टली 7:55 हो रहा है. मुझे ऐसे 5 से 7 मिनट लगेगी चल के जाने में. मुझे आज टिकट नहीं लेनी है, कॉज जब मैं लास्ट टाइम आई थी, मुझे डेट और डे याद नहीं है, बट तब मैंने व्लॉग नहीं किया था, तो उस दिन मैंने मेरा पास बनवा लिया था, द MST. तो मुझे टिकट नहीं लेना है आज. और मेरी ट्रेन 8:25 या 8:30 को आ जाती है, तो अभी मेरे पास टाइम है, आधे घंटे का टाइम है. तो हाँ, जनरली मैं इतनी ही जल्दी पहुंच जाती हूँ हर जगह. वैसे जगह मिलती नहीं इतनी इजीली, नीचे तो नहीं मिलती है, बट मैं छोटी सी हूँ तो आई क्लाइम और मैं ऊपर ही बैठ जाती हूँ. तो क्या कोई परेशान भी नहीं करता है, बेन जरा अंदर थी जाओ ने, अंदर थी जाओ ने. सो इट इज़ लाइक तुम ऊपर बैठ जाओ तो यू आर द ओनली वन. और फिर आई कैन एन्जॉय रीडिंग बुक्स और कुछ वीडियोज़ वगैरह. सो क्राउडेड, बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं. तो मैं बस सड़क के ऊपर बैठी हूँ. सो लेट्स गो, लेट्स रीच भरूच. मीटिंग भरूच बहुत ज़्यादा क्राउड. Okay guys, so I've just reached the Bharuch railway station, and now I am walking towards the rickshaw stand. The train was so crowded, बहुत ज़्यादा भीड़ थी. मैं हमेशा लेडीज़ कंपार्टमेंट में ही आती हूँ, but still there was so much of crowd there. So चलो let's get to the rickshaw stand and let's catch a rickshaw. Yes guys, I'm in an auto rickshaw and the person is waiting for another passengers to come. This is a shared rickshaw, so at least more 2 people will come, and then we'll leave to the college. Okay guys, I've just reached my college and I'm already tired. So the time right now is 10:30 and my lectures will be around 11 o'clock. So I'm waiting for my friends and मुझे भूख लग रही है, मैंने कुछ भी नहीं खाया सुबह से. वैसे मेरे कॉलेज का एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे, मस्त ठंडी ठंडी हवा चलती है. बाजू में ही नर्मदा नदी है, तो उस वजह से और ठंडी ठंडी हवा लगती है. द एटमॉस्फेयर हियर इज़ सो ब्यूटीफुल. सो लेट्स सी, मेरे फ्रेंड्स आते हैं. माना कि कैंटीन अच्छी नहीं है, मैं वहाँ कुछ खा नहीं सकती. गाइज वी हैड नो लेक्चर्स टुडे. हमारी फैकल्टी आई नहीं आज, हमारे पास कुछ करने को था नहीं, तो हम आ गए मैगडी में. विल हैव समथिंग ब्रंच काइंड ऑफ, एंड देन आई लीव टू सूरत. शायद एक लेक्चर है 1 से 2 का, पता नहीं. हाँ, और हमारे कॉलेज में मूवी की शूटिंग चल रही है. कैन यू इमेजिन दैट? हम सारे शौक थे कि हमारे कॉलेज में शूटिंग चल रही है, और वो भी वो जो ABCD में है धर्मेश द D, वो मतलब उसकी मूवी है, कोई गुजराती मूवी. सो उसकी शूटिंग चल रही है. फिर जस्ट बोलो, नर्मदा कॉलेज फेमस हो गया, A ग्रेड कॉलेज, द ओनली A ग्रेडेड कॉलेज ऑफ द B ग्रेडेड यूनिवर्सिटी. सो यार Okay guys, so I'm at Bharuch railway station. There is some train coming here. So my train was actually at 12:50, but train is late. It is delayed by 30 minutes. So the time right now is 12:40. मैं 10 मिनट पहले आ गई थी, but train late है. And don't mind my
bushy hairs and my ugly face. I'm sorry for that. Bear with me. मैं स्काउट भी भूल गई थी और ऊपर से रिक्शा ड्राइव और गर्मी और ह्यूमिडिटी. So anyways, I'll just wait for now. I will have some buttermilk or anything. I'll wait for the train. I have no other option to do with. So let's see train आती है क्या होता है, जगह मिलती है नहीं मिलती है. लेके जाने नहीं देता तो क्या फायदे का, बैग बाहर छोड़ के जा नहीं सकते. इतना टाइम Guys, can you see the humidity on my face? Gosh, the day was so tiring. The climate was so humid today, and I feel like, why did I went? For what reason did I went? Okay, guys. So as I told you, right now I'm in my car, and on the way I need to get a work done. So I'll do that. मतलब रेलवे स्टेशन से मेरे घर के बीच में मुझे काम है, तो मैं वो काम करते हुए ही जाऊंगी, वरना मुझे घर से वापस आना पड़ेगा. तो वो काम करते हुए जाऊंगी. बहुत फ्यू चॉकलेट्स फॉर माई सेल्फ. हेलो गाइज, तो मैं काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग कर रही हूँ. इट इज़ राइट नाउ 8:30 in the evening and I am having Maggie. The train journey, when you come in that general or ladies compartment, I don't know why, but I feel so dirty. So it is like I keep my bag and I directly rush to the bathroom. So I just took a bath, I had my lunch, and then I was just chilling, I was just relaxing कि मेरा सर दर्द ठीक हो जाए. पर चंपी से भी ठीक नहीं हुआ, किसी से भी ठीक नहीं हुआ. फिर I thought of washing my hairs. I just washed my hairs. उससे भी इतना फर्क तो नहीं पड़ा, but still it is better and we can't do anything. So let's say I'm just having some Maggi and I'll chill and then we'll see क्या होता है. मतलब आज का पूरा दिन मेरा वेस्ट हो गया. एक भी लेक्चर नहीं था. वो जो 1 बजे वाला लेक्चर था वो भी कैंसिल हो चुका था. हमारे कॉलेज में कुछ मूवी की शूटिंग वगैरह चल रही थी, तो सारा सब कुछ कैंसिल हो चुका था. तो मेरा आज पूरा दिन वेस्ट हो गया. This was a worthless day and I feel so bad about it. कि whenever I'll go to sleep, I feel like what have I done today? Nothing. सिर्फ ट्रेन से इधर उधर. So I'm planning to write something for tomorrow's video. मतलब tomorrow's in the sense next video